Today's topic is Beyond Breaking News, Reimagining Journalism for a Healthy Democracy. In an era of overload of information, our lives as readers, listeners, consumers of news revolves around headlines. Meanwhile, for journalism, for media houses, our work is dominated by breaking news. So how do we, in this, fast changing time, fast-paced, how do we continue to remain as a fourth pillar of democracy by giving information, unbiased information to the public, providing platform from different views, and holding those in power accountable? Do we inspire people for informed participation in democratic process? All these questions will be discussed by our esteemed panelists. They are very experienced. Let's start from Yogendra ji. So what you see beyond breaking news? So what is the responsibility of media, and what you see, what you expect beyond breaking news? Thank you. First of all, I should begin by saying that I'm the odd person out, क्योंकि मैं मीडिया से हूँ नहीं, कभी नहीं रहा. जब मुझे सड़क पे लोग मिलते हैं तो कहते हैं आप पत्रकार हैं. But the fact is, I have not spent one day of my life doing journalism. I've been on television, I write for newspapers, but I'm not a journalist. So I know much less than all my friends do. So forgive me for that. मैं बिल्कुल एक आउटसाइडर की तरह बोलूँगा, जिसको न्यूज़ रूम के अंदर क्या होता है मुझे नहीं पता. मैं तो सिर्फ बाहर से देखता हूँ, और देखता हूँ तो कई चीज़ सोचता हूँ. आपने कहा बियॉन्ड ब्रेकिंग न्यूज़ क्या हो सकता है, री इमेजिनिंग. मैं बहुत एलिमेंट्री चीज़ें कहता हूँ कि आज जो हो रहा है, दो तरह की चैलेंजेस हैं. एक तो ये है कि मीडिया को हम ब्रेकिंग न्यूज़, टीआरपी, इस रेस से कैसे बाहर लेके जाएं, वो आप लोग बेहतर बताएंगे. आप ज़्यादा जानते हैं, मैं नहीं जानता. मैं सिर्फ कुछ दूसरी चैलेंजेस बताता हूँ. आज जो मीडिया कर रहा है, इट्स नॉट जस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ मैनिया, it's also breaking heads. So much of media today is about deliberately breaking heads. लोगों में झगड़ा करवाना, दंगा फसाद करवाना, मिस इन्फॉर्मेशन देना, और उसको deliberately प्रमोट करना. ये क्यों होता है, मैं इसके बारे में चिंता करता हूँ. और ये इसलिए नहीं होता कि मीडिया को पता नहीं है, बिल्कुल पता होता है. Forgive me, I don't read Assamese media, I don't read the language, but I read Hindi. मैं इतना कोशिश करता हूँ कि सिर्फ इंग्लिश ना पढूं, क्योंकि हालांकि दिल्ली का फैशन ये है कि अगर आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ें और कोई इंडियन लैंग्वेज नहीं जाने तो दिल्ली में आपको सुपीरियर माना जाता है. मुझे हिंदी नहीं आता, ये आप दिल्ली में कहेंगे तो आपको लोग थोड़ा सा ऊंचा मानेंगे. तो मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ हिंदी मीडिया पढ़ूँ, रोज़ उसको देखूँ थोड़ा सा, और मुझे रोज़ ये महसूस होता है कि ये क्या कर रहे हैं. ये तो मीडिया नहीं है, ये तो न्यूज़ नहीं है. इंसिडेंटली दिस इज नॉट न्यू. रीड भगत सिंह, 1920s. What Bhagat Singh says about the media is almost verbatim applicable today. भगत सिंह says, इनका काम था देश को बनाना, लेकिन ये देश तोड़ने का काम कर रहे हैं. Bhagat Singh has lines on the communal role of the media, and that absolutely applies today. So that is one of my worries. Can we not go beyond breaking heads? The second thing that worries me is media's connect with the ruling establishment. देखिए, पहले भी मीडिया के रूलिंग पार्टी से कनेक्ट होते थे, इसमें कोई शक नहीं. देयर इज नथिंग न्यू.
ऐसा कोई कहे कि 2014 से पहले मीडिया वॉज नॉट कनेक्टेड टू द रूलिंग पार्टी, दैट वुड बी ए लाई. सबके कनेक्शंस होते थे, सब तरह का पेमेंट भी होता था. आई नो, आई मीन ऑल ऑफ अस नो ऑल द थिंग्स, सब कुछ होता था. मीडिया promoting the ruling party and ruling establishment a little more was common. Media promoting government policies was also common. But media attacking the opposition in order to suit the ruling party, that was not done. है ना? ये जो है, to attack the opposition like a pack of wolves, forgive me, बहुत बुरा शब्द है, लेकिन क्या कहें, ऐसा ही मेरे को शब्द इसका ध्यान आता है. बिल्कुल भेड़िए की तरह ऑपोजिशन के ऊपर टूट के पड़ते हैं. ये दुनिया में कहीं नहीं होता. दिस इज व्हाट इंडियन मीडिया प्रैक्टिसेस टुडे. यू कैन ब्लेम द करंट रूलिंग पार्टी, मगर एक बात बताऊं मैं आपको, और आई विल जस्ट एंड विद दिस, हम बात करेंगे. एक बार जब गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी को या रिजीम को एक बात अगर पता लग जाए कि मीडिया को, यू कैन मेक देम फॉल इन लाइन, नेक्स्ट गवर्नमेंट विल डू एग्जैक्टली द सेम. एक बार उनको पता लग जाए. इसी जो स्टेट का रिजीम का जो कैरेक्टर होता है वो डिफरेंट नहीं होता. पार्टीज आती हैं जाती हैं. सिटिंग एट दिस स्टेज I can easily say कि BJP regime, this central government has destroyed the autonomy of the media. It is true. But then I look at Bihar, I look at Punjab, I look at Tamil Nadu, I look at states not governed by the BJP. Is their relationship with the media any different? I don't know. और मेरे को ये डर है that we are moving very firmly in a direction where media is increasingly an extension of the state, extension of the government, extension of the ruling party. And the last thing that worries me, and I'll stop there, is media's corporate connections. Now media is being done for profit. It is not a philanthropy. बिल्कुल ठीक बात है. आपने धर्मशाला नहीं खोली है, आप धंधा कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाना है, बिल्कुल ठीक बात है. और मैं हमेशा कहता हूं कि जो मीडिया हाउस और जर्नलिस्ट मीडिया चला के पैसा कमाना चाहता है वो तो धर्मात्मा है, उसकी तो पूजा करनी चाहिए. जो सोचता है कि अपना न्यूज़पेपर मैंने चलाना है, न्यूज़पेपर को ज़्यादा बेचूंगा, उससे ज़्यादा पैसा आएगा, बहुत अच्छी बात है. That is not what is happening in the country. अखबार आप इसलिए चलाते हैं क्योंकि आपके माइनिंग इंटरेस्ट जो हैं, जो रियल एस्टेट है, आपने 5 और धंधे कर रखे हैं, उस धंधे को प्रोटेक्ट करने के लिए मीडिया चलाया जाता है. दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग. सो अब आज सुबह मेरे पास असम से खबर है जो शायद प्रतिदिन ने छापी है. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में दिमसामा एक जगह, सॉरी मैं शायद नाम ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ, वहाँ पे दिमाहासाऊ में, हाँ दिमाहाम, हाँ वहाँ पे लोगों की लैंड एक्वायर की जा रही है 9,000 बीघा. सो यू नो, प्रतिदिन में छपी थी, मैंने इसीलिए देखा है उस खबर को. शुड 9,000 बीघा लैंड एक्वायर नहीं की जा रही है. लोगों को पता लगा कि उनकी लैंड एक्वायर की जा रही है. कैसे? जब माइनिंग ऑक्शन शुरू हुआ. सो जमीन मेरी है, मेरी जमीन पे सरकार ने अभी एक्वायर नहीं किया है, सरकार मेरी जमीन को माइनिंग लीज पे देने के लिए ऑक्शन कर रही है. दैट्स व्हेन आई गेट टू नो कि मेरी जमीन चली गई. शुड दिस नॉट बी ए नेशनल न्यूज? नो, no one bothers in this country because ये A1 और A2 का खेल है. A2 is involved in this. तो A2 involved है तो कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा इस चीज को. That is what worries me. So in sum I would say, while we talk about media being the fourth pillar, media being the solution, frankly I really feel
media is part of the problem of this country, not a part of the solution. It's increasingly part of a very serious problem of democracy. How do we solve that? I'm an outsider, please tell me. Yeah. Coming to Sanjay ji, Yugandhar ji said about the media's role, and it's not new. Even in our freedom movement, media journalism played a very crucial role. So Akbar Allahabadi, that time freedom fighter, and you must be know that, he said, again Hindi, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो जब तक मुकाबिल हो तो अखबार निकालो. So you are very experienced, and your 4 p.m. news was placed first position for almost 10 months before 24 election, and you did tremendous work, and you got maybe result also. But my question is that, what do you think about the future of these alternative medias? Like you, Dhrubrati, Rabish Kumar, what you have been doing is alternative media, like alternative of legacy media, and you can call it Godi media also. So what do you think the future from the perspective of sustainability, means budget, infrastructure, from everything? Is it possible to continue for the next final game? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया. मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कम से कम कल रात का अनुभव बताना चाहूँगा. मुझे लगता था कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार मेरे पीछे पड़ी रहती है, तरह तरह की जांच सामना किया मैंने, मेरे ऑफिस पे द्वारा हमला हुआ, तो मैं अपने आप को बहुत क्रांतिकारी समझता था कि मैंने तो बड़ी लड़ाई लड़ के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. लेकिन कल रात को मेरे कुछ भ्रम खत्म हुए. आपके इस प्रतिदिन के स्वामी मालिक कल सामने बैठे हैं, मेरे पास आए, और फिर जब मैंने इनकी जीवन यात्रा सुनी कि आसाम में कितने संघर्ष के बाद ये आपका संस्थान खड़ा हुआ, तो मैंने अपने आप को बहुत बौना महसूस किया कि संघर्ष की दुनिया में इतने बड़े बड़े लोग हैं, सत्ता से टकरा कर वो यहाँ तक आए हैं. तो मैं बहुत छोटा महसूस किया मैंने अपने आप को. लगा कि दुनिया बहुत बड़ी है, हम ही नहीं हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सत्ता के खिलाफ लड़ते हैं, संस्थान खड़ा करते हैं और पूरी देश और दुनिया में नाम खड़ा करते हैं. तो पहले मैं आपको सलाम करूँगा. अब आपने मुझसे कहा कि इन सब का भविष्य क्या है, तो मैं लगभग 35 साल के जर्नलिज्म में 2003 में एक बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तब इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स कम थे, उसमें काम करता था. एक दिन मेरे पास में एक संदेशा आया संस्थान के मालिक की तरफ से, और बड़ा बढ़िया कैरियर चल रहा था, टीवी चैनल बहुत कम थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि अमर सिंह कल तुम्हारे शहर में आ रहे हैं, हम इतना फंड तुम्हें अलॉट कर रहे हैं, बाकी किसी अखबार में चैनल में अमर सिंह के खिलाफ खबर ना छपे. मैं उसी दिन समझ गया था कि आने वाला समय अब मीडिया हाउस के ऊपर अमर सिंह जैसे बड़े व्यक्तित्व का या कारपोरेट का होने वाला है. और उसी दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं अपना संस्थान चलाऊँगा. मैं लखनऊ में आया, एक भी चौराहा नहीं जानता था, लेकिन मैंने वहाँ से अखबार शुरू किया. आपकी तरह मैंने भी वीकली शुरू किया, वीकेंड टाइम्स निकाला, फिर डेली अखबार शुरू किया 4 PM, और उसके बाद बहुत ऐसी खबरें निकाली जो सरकार को अच्छी नहीं लगती. तब अखिलेश यादव CM थे और मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, मैं उनके पास जाता था, वो मेरे पास आते थे. और मेरे लिए आज ये मंच है कहने का कि वो मेरे लिए एग्जाम्पल सेट था कि उस समय सबसे ज़्यादा सरकार के खिलाफ लिखने वाला मैं था और CM का दोस्त भी था. अभी मैंने 1-2 महीने पहले फंक्शन किया, अखिलेश जी थे, तो मैंने उनके सामने कहा कि इस दौर में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप मुख्यमंत्री थे, मैं सबसे ज़्यादा आपके खिलाफ लिखता था, आप मुझे बुलाते थे, मुझे छोड़ने आते थे गाड़ी तक, लेकिन एक लाइन खींच रखी थी, मैं आपसे काम को नहीं कहूँगा और आप मुझसे खबर को नहीं कहेंगे. और हमने दोनों ने उसका पालन किया. लेकिन जैसे योगेंद्र जी ने कहा कि अब सत्ता को ये पसंद नहीं है कि उससे सवाल किया जाए, और मैं इसमें सत्ता की गलती नहीं मानता. जब 100 में से 99 लोग ये पूछने लगे कि आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, आप बटुआ रखते हैं या नहीं रखते हैं, जब नेता से ऐसे सवाल होंगे तो फिर जो सवाल करेगा किसानों पे, जो सवाल करेगा बेरोजगारी पे, जो सवाल करेगा कि हिंदू मुसलमान क्यों किया जा रहा है, वो उनकी आंखों में खटकेगा. तो आपकी तरह मैं भी खटका उनकी आंखों में. मेरे खिलाफ EOW, ED, STF, इनकम टैक्स सब कुछ हुआ. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये सिलसिला रुकेगा कहाँ पे. ये सिलसिला इस देश का आम नागरिक रोकेगा, और वो कैसे रोकेगा मैं वो भी उदाहरण देता हूँ. एक बार मैंने एक शो किया, प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए
तो मैंने शो में कहा कि आज तक के शायद हेडिंग थोड़ा बहुत शब्द इधर उधर हो सकते हैं, लगाया कि प्रधानमंत्री गए अमेरिका और हिल गया अमेरिका। मैंने अपने शो में कहा कि इनके यूट्यूब पे देख के इनके व्यू कितने हैं, तब उस दिन शायद उनके 800 कुछ व्यू थे। मैंने कहा 10,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, इसका मतलब इनके चैनल के लोग इन्हें नहीं देखते। अगला मैंने ABP का लगाया, 1000 से भी कम व्यू थे। और उसी दिन मैंने कहा कि अमेरिका में लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र का गला घुट रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को उम्मीद नहीं थी। मेरे 6 लाख से ज़्यादा व्यू थे। ये जवाब है इस मीडिया का उस मीडिया को। योगेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो लकीर अब खिंच गई है, इतनी बड़ी खिंच गई है कि अब उस लकीर को पार पाना शायद मुश्किल होगा। और कारण बड़ा ये है कि उद्योगपति आ गए, वो टीवी चैनल खरीदने लगे, वो अखबार खरीदने लगे। कोई उद्योगपति खरीदे तो बुरा मैं नहीं मानता, बिरला जी ने भी एक टाइम में खरीद लिया था संस्थान में और बाकी काम किए थे। लेकिन मैंने कभी भी सांप्रदायिक आधार पे ऐसी लाइन कभी नहीं देखी 35 साल में जो अब देख रहा हूँ मैं। Chanji ji will come to that point. The corporate influence on the media will come to that point. Yeah. फ्यूचर जो है, आप ब्रेकिंग न्यूज़ का जो आप चला रही हैं, मैं मानता नहीं कि ब्रेकिंग न्यूज़ के बिना अब मीडिया का अस्तित्व आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जनमानस जो देश का है, जो 120-130 करोड़ लोग हैं, उन्हें हर सेकंड में खबर चाहिए, उन्हें ब्रेकिंग खबर चाहिए। तो आप ब्रेकिंग में क्या चला रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जब आप देखेंगे कि ब्रेकिंग में एक आदमी ऐसी चला रहा है जो सारी गलत खबर है, तो निश्चित रूप से उस ब्रेकिंग को महत्व नहीं मिलेगा। ब्रेकिंग न्यूज हमारे जीवन के में घुल गई है, हमारे जीवन में आ गई है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ का परिणाम क्या होगा, ये वो चैनल पे आप जब उसको अनलाइक कर देंगे कि यार ये तो गलत ही खबर देता है, तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ को कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज़ आए क्योंकि अब आप बड़ी फास्ट लाइफ में जी रहे हैं, आपको हर सेकंड में हर मिनट में खबर चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि खबर दे क्या कौन रहा है, उस संस्थान की महत्व कितना है, उसकी विश्वसनीयता कितना है, ये आने वाले समय में तय कर देगा, मेरे को ऐसा लगता है। Coming to Patricia, Bimal Akoijam, MP from Manipur, he said, Northeast is seen through a schizophrenic lens. So my experience with, one of my experiences like that, maybe 8 years back, I wrote to a noted journalist from a huge media house, National Media, on her Twitter handle. I wrote, don't you think that Northeast is always under eclipse in national media? That giant journalist replied, don't you think that you should apologize for your separatist comment? But I am happy, after 8 years, Patricia, that noted journalist started a YouTube channel, and that day he said that national media come to Assam for Sheena Bora murder case. They don't come for flood, they don't come for Manipur. So I'm happy for that. I just, your opinion on this Northeast issue in national media. Thank you very much, and thank you, Pratidin, for this opportunity to be here. I'm sorry I don't speak Hindi or Assamese. We live in a very different stratosphere in the Northeast. We are least understood. Many people will understand Assam partly, but beyond that, we are all stereotyped. And I think Bimal Akoijam is correct that we are seen from schizophrenic eyes. Manipur has been burning for over a year now, and the country doesn't care. The Prime Minister doesn't care. He goes all around the world trying to make or bring world peace. But internally, the country is burning. And the sad thing about the Northeast is that at the moment, even Bangladesh is in conflict, in turmoil, and those states that border Bangladesh, are facing the brunt. But who cares? It's not being discussed in so-called mainstream media. There's very little discussion. The discussions happened after 3rd May last year, and now they've taken it in their stride. They don't care. So this country really does not care about the northeastern region. We are the periphery. We are just an extension of the country. I don't know why they call it all kinds of Astha Lakshmi and all this, they give all these funny names, but they really do not understand the region, the people, because we are not one people. We are different cultures, and it's not important to just romanticize us or to romanticize
our women, or to romanticize the matrilineal society, as we saw one question today. We have very specific problems in every state. Today, it was pointed out that Meghalaya is just above Bihar in terms of poverty and development. That was many years ago. That was Niti Aayog report many years ago. Today, if you come to Meghalaya, it will be over 37% of its people living below poverty line. But again, who really cares? The central government continues to pump money to that region, to buy all its politicians, and that's it. That is governance. But is that really governance? Why is it that the central government, which is the funding agency, not holding the governments in the Northeast accountable? This is a very serious problem. And I want to say some things about breaking news. In the media, unfortunately, we do not have a revenue model. We all depend largely on advertisements. And in our region, where we don't have too many corporate houses, too many companies, we depend on government advertisements. And we are punished if we write anti-government stories. We lose out on advertisements. So this breathless journalism, this breaking news syndrome is here to stay, because the more eyeballs you get, the more money you earn. And it's a vicious cycle. I don't know how or who is going to break it. Like I was introduced as coming from the legacy media. Very soon we from the print media will be a once upon a time media. You know, people will forget us because everyone is holding a mobile phone. Everyone is looking at the phone by the minute to see what breaking news is there. And we haven't even tried to assess the mental health problems that this constant breaking news is causing, especially to the younger generation. Today, you don't even have to turn on the television set to know what's happening in Ukraine, what's happening in Israel, what's happening in Palestine. It's there on your fingertips, and you're dealing with so much news that you are not in a mental state of health to even make informed judgments. The media is there, especially what you call the legacy media. We have to do a lot of fact-checking. But do YouTubers do that? Do digital news media do that? No. They are there to create conflicts. They are there to create quarrels on their panels. And I think, when I think about democracy in this country, I feel very depressed, because I think we are losing out. We are really, really losing out. And about mainstream news, I really don't like the word mainstream, because I think what we've also done is we report only from the urban centers of the states in this country. I admit this, even as editor, maybe we haven't done enough to give voice to the rural areas of this country. And that's, I think, a major, major fault line. Thank you, Patricia. But I think people will come to print media again, because people will get bored with these fast things, no? Let's hope so. Yeah. We can keep our fingers crossed, because we do a lot of analytics. Yeah. We do a lot of fact-checking, and we are held accountable by the Press Council of India. Yeah. But who is holding the digital media accountable? Yeah, I'm sure print media will never die. Coming to Karma, it's a data of Press Freedom Index. You must be knowing, position fell down from 150 to 161 among 180 countries. So 11 points down in 1 year. What do you think? And you are very experienced, and you worked with giant media houses earlier, News 18, maybe Times of India, and now you started East Mojo'r from our Northeast. We're proud of that. So what is your opening remarks on this? What is there beyond breaking news? I think, media is truly dead not just in India, but across the world. And when I'm saying that media is dead, media mar gaya hai,
एक दो जगह में आखिरी सांसें ले रहा होगा तो ये अच्छी बात है. It makes me very optimistic that the media is dead. And sometimes I like to scream out loud in my newsroom saying, media is truly dead, and I'm very happy. Maybe now there is a chance for us to rise. And you may be thinking, what is this idiot saying, media is dead? Because you see so many media channels across, they are saying everything. That is not media. What we are doing today is public relations. None of us is doing the true work of media. So media hai hi nahi. Fourth pillar of democracy ka jo bhram hai, in your minds, that is there, oh, we are the fourth pillar of democracy. Sadly, that fourth pillar of democracy has corroded. Zang kha ke wo kab ka gir gaya hai, humko pata bhi nahi chala. So for me today, I am not a journalist. I told my newsroom that we are seriously thinking about opening a dhaba in Sonapur if the roads, if the traffic is better there, and I will be able to run my little rag called East Mojo'r with that money that I get from the dhaba. Because being the digital media, we don't get money, and it's all right. Whenever I go and argue with my friends in the, I know you don't like the word Kong, but I'm using in the mainstream media, ki why are you doing this? This is not what we are taught in journalism school. एक ही argument है कि कर्मा यार तुमको तो बोलना बहुत आसान है, हम लोगों का तो EMI है. I mean, what kind of a journalist are we now? Because we are caught. We have moved away from the reason why we joined journalism. I go to different journalism schools to give lectures. Sometimes I invited. I tell the students, why do you want to join journalism? If you want to join journalism to get a salary, then you are in the wrong class. You should go to some other class. And it's reflected. Every year I am calling up journalism schools and asking, okay, out of the 10 students that we trained at East Mojo'r, how many of them joined journalism? 1. Some batches 0. So they are also getting the message. So it's great. Climate change is happening across the world. Climate change started in journalism, and climate change has accelerated to such an extent that heat hoke, we've reached a stage. And nobody is holier than thou. कोई भी एक moral high ground नहीं ले सकता कि मैं बहुत बढ़िया journalism करता हूँ. I cannot come out to you and say, oh, Karma is doing great journalism. We are not. If I have to pay my journalists, I have to do namaste to 10, 15 people here and there. I have to do it. That's the sad reality. But what is stopping you all from giving me 50 paise a month? I mean, if I ask you all for good, you want good journalism? Chalo, mujhe kuch nahi chahiye. I don't want to drive fancy cars. I don't want a fancy phone. Give me 50 paise a day and let us do good journalism. Nobody will give me that 50 paise. You will go to Starbucks and spend 350 rupees or 500 and whatever rupees for a cup of coffee, but you want good journalism. You will sit at home, ye bekar journalism hai, ye falna journalism. और journalism नहीं है आज. या तो आप इस साइड के जर्नलिस्ट हो, या तो आप इस साइड के जर्नलिस्ट हो. कोई भी मिडिल का जर्नलिस्ट नहीं है जो दोनों साइड का फैक्ट चेक करे और दोनों साइड का क्वेश्चन पूछे. And the most important, the final thing is that we are, he says, she says, journalist. उसने बोल दिया, हमने छाप दिया, इसने बोल दिया, हम छाप दिया. वाह, I am balanced journalist. Yeah, no fact-checking. So I hope the phoenix rises soon. Climate changes started in journalism. It's very interesting. Yogendraji, now I want to know from you what is there beyond breaking news in Haryana. Because from breaking news we came to know that it is almost clear that opposition is winning the election and anti-incumbency is very strong, and some say that tussle of leadership can affect the margin of votes. Like, these are the breaking news we got. But as you have been working
with mass people there. We have been working in the grassroots. And you are psephologists. You are the only psephologists who could have, predicted the accurate result in last Lok Sabha election. So anyway, you tell us about the Haryana, beyond breaking news in Haryana. I don't think I have very much to say. ये हरियाणा इलेक्शन है, मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ. Now the fact is there is nothing exciting about that election. I have been saying for more than 1 month that this is one of those elections where the result was decided before the election was announced. But television है, उन्हें टाइम पूरा करना है, डिबेट करवाना है, अप एंड डाउन दिखाना है, रोज कोई ना कोई झूठा सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं. अब ये हो रहा है, अब वो चेंज हो गया है. Nothing has changed. The election is exactly what it was 6 weeks before it was announced. मैंने पहले कहा था कांग्रेस इज विनिंग कंफर्टेबली. अब उसको मैंने सिर्फ कहा था कि ये हरियाणा में हवा है, आंधी है या सुनामी है, दैट इज द ओनली क्वेश्चन. बट कांग्रेस इज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. अब उस पर इतना सब घुमा फिरा के, कल आपने एग्जिट पोल देख लिया और जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट होगा. मगर इट एक्चुअली टेल्स यू, तो मैं हरियाणा इलेक्शन पर क्या बताऊं. वन ऑफ द थिंग्स दैट स्ट्राइक्स मी अबाउट इलेक्शन कवरेज, सिंस ऑल ऑफ यू डू दैट, is that I learn nothing from election coverage. I read what is published in the newspapers, I get from some YouTubes and so on. Mostly, I learn zero. I learn the following party has put up this candidate, उसका ये जाति है, उसका ये है, वो है. तो मैं 800 words पढ़ गया. All I learn is कि ये 4 candidate हैं, उनका ये कास्ट है, और उसका ये प्लैंक है, उसका ये प्लैंक है. बाबा ये तो दैट आई कुड हैव डन इंटरनेट रिसर्च. यू हैव गॉन देयर. मुझे कुछ तो बताओ क्या हुआ वहाँ पे. नो वन टेल्स यू एनीथिंग. सो यू हैव न्यूज़ रिपोर्टिंग विच टेल्स यू नथिंग. I mean, this is art of saying nothing in 800 words. I mean, I'm astonished about these things. और सिर्फ हरियाणा में नहीं, सब जगह हो रहा है ये. और यही ही सेड शी सेड, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा. अरे बाबा इसमें सच क्या है, मुझे इतना तो बता दो. किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो मैं समझता हूँ जो आप दोनों ने सवाल उठाए, संजय भाई ने उठाए, ये बहुत ज़्यादा सीरियस सवाल हैं. अलाउ मी टू गो बियॉन्ड योर क्वेश्चन एंड आस्क वन थिंग. और ये मैं आप सबसे कह रहा हूँ जो पीछे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स भी यहाँ हैं. ये एक इंडियंस के लिए मैंने लिटरेसी टेस्ट डिवाइस किया है. Do you know your country? It's a simple literacy test. आज आप किसी भी कैंपस में जाइए, वो आपको मिनेसोटा के बारे में जानते हैं, मिशिगन के बारे में जानते हैं. So my simple test is, please write 1 sentence each about Meghalaya, Manipur and Mizoram. जो इसके बारे में एक सेंटेंस, and don't say these are states of Northeast. That's rubbish. Don't say these are tribal states, that's inaccurate. Just एक सेंटेंस आप इन तीनों स्टेट्स के बारे में लिख दीजिए. जो पास कर जाएगा वो इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है. जो ये पास नहीं करेगा वो इंडियन लिटरेसी का टेस्ट पास नहीं करता. आई कैन टेल यू 90% educated Indians will fail this test. And sadly, I can tell you, maybe Karma, you know it better. I think 2/3 of editors and journalists will also fail this test in Delhi city. It's true. तो सचमुच एडिटर्स को नहीं पता. मतलब मैं बता रहा था आपको, मेरे से लाइव टेलीविजन पे एक मतलब सीनियर पॉलिटिशियन ने जो पार्लियामेंट्री कमेटी में थे, 10 years ago he argued with me, Manipur is a 100% tribal state. मैंने कहा नहीं सर, एक्चुअली ऐसा नहीं है, एटसेट्रा. आई डिडंट वांट टू ऑफेंड हिम. मैंने कहा वो मितेई हैं, एटसेट्रा. ही सेड आई एम इन द पार्लियामेंट्री कमेटी, आई नो अबाउट नॉर्थ ईस्ट, व्हाट डू यू नो, इट्स a 100% ट्राइबल स्टेट. सो आई मीन दिस इज द सिचुएशन. इसको हम कैसे एड्रेस करें? I'll just tell you about one very small story. So Pat Kong and I are dial and editor. दिल्ली से जिसको भी कुछ भी समझना होता है on the जल्दी से बताइए. So one very senior टेलीविज़न एंकर कॉल्ड मी, कर्मा मेरे पास टाइम नहीं, आप जल्दी से संक्षेप में बताइए कि ये मणिपुर में क्या हो रहा है. मैंने बोला कितना संक्षेप में चाहिए आपको. बोला
एकदम जल्दी चाहिए। मैंने बोला 2 भाई हैं, जमीन के लिए लड़ रहे हैं। Great, great comment. बोला स्टोरी खत्म। Thank you, Karma. It's a great comment from you. Coming to you, Sanjay ji. आप थोड़ी देर पहले आप comment किया था आपका corporate's influence on media. So what do you think about the corporate balance? How media can balance between corporate influence and ethical considerations? Is it possible nowadays? Because bada ye media houses are sponsored by big giant corporates, right? Nowadays. So is it possible to balance between the corporate influence and ethical considerations? देखिए, आप कोई बड़ा हाउस चलाते हैं, कोई बहुत बड़ा अखबार निकालते हैं, टीवी चैनल चलाते हैं, तो मैं मानता हूं कि आपको शायद सरकार से, कॉर्पोरेट हाउस से मदद की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बड़ा लकीली डिजिटल मीडिया एक ऐसा दौर आ गया है जिसमें आपको ना सरकार से ज़रूरत है, ना कॉर्पोरेट से ज़रूरत है। और जब आप सच बोलते हैं तो लोगों का कारवा आपसे जुड़ता है। आपका यूट्यूब में होंगे, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे होंगे, तो रेवेन्यू ऑटोमेटिक आता रहता है। उसमें जो ये कर्मा भाई ने कहा कि ढाबा खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, तो शायद बहुत बड़े अखबार में और टीवी चैनल में तो पड़ेगी, लेकिन डिजिटल मीडिया ने ईश्वर की कृपा से आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि आप अगर सच बोलेंगे, लोग सुनेंगे, तो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली आएगा। तो मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट को भी समझ में आ गया है, देश के दोनों लोगों का, जो A1 A2 कहते हैं, अंबानी अडानी, इन दोनों को समझ में आ गया है कि देश का जनमानस अब गोदी मीडिया की तरफ नहीं जा रहा, अब वो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बताया जा रहा है कि जो आपने छापी खबर कि अगर 9000 बीघा ज़मीन सरकार ले रही है, तो मत चले वो किसी भी गोदी मीडिया के बड़े चैनल पे, लेकिन जब डिजिटल मीडिया पे ये खबर चलेगी तो वो पूरे देश में जाएगी, पूरे दुनिया में जाएगी। तो वो डिजिटल मीडिया कैसे कंट्रोल में हो, उसके लिए बिल तैयार कर लिया गया था। वो तो लकीली सरकार ऐसी आई कि वो बिल पास नहीं हो पाया, वरना इस डिजिटल मीडिया पे कब्जा कैसे किया जाए, इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन लकीली भारत में अभी भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया कर रहे हैं। ध्रुव राठी हैं, रवीश कुमार हैं, इनके वीडियो ने पूरे जनमानस का सीन बदल दिया चुनाव में। ध्रुव राठी के वीडियो ने कमाल कर दिया, रवीश जी की जो स्टडी होती है वो कमाल करती है। तो इस तरह के जो यूट्यूब चैनल्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, वो कम से कम ये संकेत तो दे रहे हैं कि अब कॉर्पोरेट का दखल नहीं आएगा। कॉर्पोरेट के दखल के बिना पत्रकारिता की जा सकती है, सरकार की मदद के बिना पत्रकारिता की जा सकती है। मुझे लगता है ये एक नई क्रांति है, और इस देश में जब भी सरकार दमन करती है तो कहीं ना कहीं से कोई क्रांति की बात शुरू होती है। जब अंग्रेजों ने दमन किया तो हाथ से लिखे हुए अखबार आते थे, जब सरकार ने और कॉर्पोरेट ने दमन किया तो डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया। ये एक स्वतः जनित एक चीज़ उभरी है, और ये मुझे लगता है कॉर्पोरेट इसको नहीं दबा पाएगा, क्योंकि अब हाथ में गांव में खड़ा हुआ आदमी बता रहा है कि हमारे यहाँ ये उत्पीड़न हो गया, यहाँ खनन हो गया, यहाँ पेड़ काट लिए गए। तो बड़ी जगह नहीं दिखाए गए, लेकिन छोटे छोटे जगह पे डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार की नज़र ना पड़े इन पे, सरकार दमन ना कर पाए, तो ये भारत के लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा। कोशिश तो किया ना, ध्रुव राठी, रवीश कुमार जैसा यूट्यूबर को बंद करने के लिए नया आइन लाने वाला था। somehow it is वही बता रहा हूँ कि वो तो अगर ये सरकार जैसे एग्जिट पोल के आंकड़े लोकसभा चुनाव से पहले कह रहे थे अब की बार 400 पार, 350, 300, या अगर 300 प्लस हो गई होती तो ये बिल आ चुका होता। हम लोग प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल पा रहे होते, हमें हमारे ऊपर इतने प्रतिबंध हो चुके होते, क्योंकि उनकी CNDS का एक सर्वे था कि 29% लोगों ने मन बदला, केवल यूट्यूब को सुन के बदला। और यूट्यूब के कितने लोग थे? 1 दर्जन लोग थे, केवल 10-12 लोग थे जो खुलेआम बोल रहे थे, और जिनको लाखों लोग सुन रहे थे। गांव-गांव में उनके वीडियो डाउनलोड होकर बिक रहे थे, करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे थे। तो अब इस सरकार की, इस कॉर्पोरेट की सबसे बड़ी जो दुश्मन है वो डिजिटल मीडिया है, यूट्यूबर्स हैं, हम जैसे रवीश जी, ध्रुव राठी जैसे बड़े लोग हैं, कि जो ये सच बता रहे हैं देश को कि देश में चल क्या रहा है। योगेंद्र यादव जी भले पत्रकार ना हो, लेकिन हम जैसे पत्रकारों के लिए संजीवनी है, क्योंकि जब ये आते हैं तो कम से कम वो बातें तो बताते हैं। हम किसी पॉलिटिशियन को बताते हैं, वो भी उन्हीं की तरह होता है, उसे भी वाकई में कुछ नहीं पता होता है। तो इस तरह के थिंक टैंक कहाँ जाएंगे? इस तरह के थिंक टैंक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वो बोलेंगे, उनकी बात सुनी जाएगी। आपने कितने बड़े चैनल पे योगेंद्र यादव जी का ऐतिहासिक हरियाणा में भाषण सुना, हरियाणा का सीन बदला, नहीं दिखाएंगे वो लोग। लेकिन लकीली ये क्रांति अब डिजिटल की तरफ बढ़ गई है और लोग बहुत सुन रहे हैं।
जो आपको आंकड़े, जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं, लकीली मैं 10 महीनों में नंबर 1 चला हूँ, उसके व्यू देखिए। वो जो गोदी मीडिया है वो कहीं दिखाई नहीं देता उन 30 में। वो 30 के जो आंकड़े आते हैं उसमें सिर्फ वो लोग हैं जो सरकार से सवाल कर रहे हैं। और हमने तो सीखा ये था कि सरकार जो बताती है वो विज्ञापन होता है, जो छुपाती है वही खबर होती है। तो आपको खबर चाहिए तो सरकार की आंख में आंख डाल के सवाल पूछना शुरू कर दीजिए। रेवेन्यू भी आएगा, सम्मान भी बढ़ेगा, मान भी बढ़ेगा, अंदर अभिमान भी बढ़ेगा। आपको गर्व महसूस होगा कि आप एक पत्रकार हैं और सही मायने में पत्रकारिता कर रहे हैं। सरकार से सवाल पूछेंगे तो देश आपको आंखों पे बिठाएगा, ये बिल्कुल तय है। Very strong opinion. Coming to Patricia, coming to our safety, your safety. Data is journalist killings. 8 journalists were killed in 2023, including one from Assam. So, considering the security of media personnel, how safe are journalists? Very unsafe these days. If you want to do journalism, then you also have to be looking behind your back all the time. Somebody threw a petrol bomb at my house in 2018. So, you know, this whole idea of truth to power it sounds good, but it's very, very hard to practice. And I think one thing is missing here today, and that is one mainstream journalist. Because I think that person also needs to tell us her revenue model, how they manage, so that we can also learn from them. And hold them also accountable, right? Especially those who ask, the nation wants to know. Sometimes I want to ask, which nation are you talking about? Because India is several nations. Sometimes some things that bother the rest of India don't really affect us. But what affects us doesn't affect the rest of India. So we are many countries, and I think people take advantage of that. And we get, we also try and consume some of that national media because we need to make ourselves appear as if we are quote unquote Indian in our outlook. Sure. Thank you, Patricia. My time is up actually. So I have to hand over my microphone to Mrinal now. There are some Q&A, that's why. But I'm tempted to actually see the result of the opinion poll. I belong to the legacy media, but I also look up to 4 p.m. and Jogendra Jadavji for last 2:30 election followed you hard to get the real picture in North India and see the opinions of the opinion poll. For hard socio-political news, you bank on what? That's my question. Conventional media, print and oblique television, and alternative media. Let's see the results of the opinion poll of this particular room. It says 56% digital, 43% conventional. To Patricia and me, I still have at least some scope. I really feel that our generation is lacking critical thinking. In this situation, the media is feeding facts to people instead of wisdom. What should be the media's role in developing critical thinking in the younger generation? देखिए, I do not believe that this generation is lacking critical thinking. All human beings generally lack critical thinking unless they are taught. है ना? आप मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मैं कहूँ हमारे ज़माने में बहुत अच्छा था, कुछ नहीं था। हमारे ज़माने में भी मैं जानता हूँ क्या था। सब कुछ वैसा ही होता है। थोड़ा सा बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो पता नहीं दुनिया बड़ी पुरानी ग्लोरियस दिखने लग जाती है। ऐसा कुछ था नहीं। You have to teach. Critical faculties have to be developed. Either you develop it through formal education, or you develop through informal education, or you develop through media. किसी तरीके से तो होगा ना। I can tell you about myself. I went to university में कुछ पढ़ाया, but I think I developed my critical faculties by participating in student politics. And I say this because Assam is still one of the leading places in the country when it comes to student politics, youth politics. ये जो आंदोलन जीवी करके इस देश के प्रधानमंत्री बदनाम करते हैं ना, आंदोलन जीवी, इन आंदोलनों ने इस देश को बनाया है। क्रिटिकल फैकल्टी आंदोलन डेवलप करते हैं। आपको टेक्स्ट बुक में तो हर सरकार की बात बता दी जाती है,
सिर्फ आंदोलन होते हैं, कुछ बाहर का होता है जो आपको एक अलग व्यू पॉइंट देता है कि नहीं, what you have been taught is not quite true. So I think developing critical faculties is a function of all these things. And when formal mechanisms fail, that is when andolans come in. And that is the great role of those movements. I can tell you, I was young in the university. Assam movement had started then, 1982-83. And all my leftist friends said, this is chauvinist movement. This was the standard leftist line during those days. It's a chauvinist movement, it's this. But I belonged to a small streak of movement which said, no, you have to understand the problem from the viewpoint of those people who live there. So some of my colleagues went to Assam on bicycle. From Delhi to Assam, they actually traveled on bicycle to understand the problem of Assam. That gave them critical faculty. So critical faculty सिर्फ किताब से नहीं मिलता, जमीन से connect से मिलता है, और वो develop हम सब कर सकते हैं. Myself Ashfaq Chaudhary from Delhi School of Journalism. So currently in case of media houses, if one of the media houses is named as pro-government and there is named as pro-opposition, so in between that, what would you suggest that as a media student, how should we neutralize that? देखिए, जैसे कर्मा भाई ने बताया, एक बहुत बड़ा किस्सा हवा में प्रचलन में आ गया सोशल मीडिया पे कि किसी ने पूछा क्या करते हो, तो उसने कहा मैं पत्रकार हूँ. उसने कहा कौन सी पार्टी के हो. तो ये दुर्भाग्य कह लीजिए देश का कि अब जो मीडिया है, अगर आप जो योगेंद्र जी ने भी कहा कि ये दुर्भाग्य है कि या तो इधर है या उधर है. और इसमें सिर्फ मैं मीडिया को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि इस देश में 2014 के बाद, खासतौर से मैं इसलिए कहूँगा, ऐसा नहीं है, योगेंद्र जी ने कहा मैं सहमत हूँ, मीडिया का आर्थिक रूप से सत्ता से फ़ायदा पहले भी होता है, कांग्रेस भी करती रही. लेकिन मेरे एक मित्र ने कहा कि तुम्हें मोदी जी का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने पूरे देश को बता दिया कि मीडिया खरीदी भी जाती है. पहले चुपचाप खरीदी जाती थी, अब ओपन खरीदी जाती है, अब ओपन होते हैं. लेकिन मैं इस देश में जितना मीडिया को दोष दूंगा उतना जनमानस भी कहीं ना कहीं एक लाइन बना दी है उसने कि उसको अगर बहुत सरकार की अच्छी चीज़ें चाहिए तो इस चैनल को देखो, सरकार की थोड़ी क्रिटिसाइज देखनी है तो इस चैनल को देखो. मीडिया में कोई आपको इधर वाला नहीं दिखाई देगा. जो टीवी चैनल आपके घर पे लगे हैं, जो टाटा स्काई पे आते हैं, जो एयरटेल पे आते हैं, उसमें कोई भी सरकार से सवाल पूछने वाला नहीं दिखेगा, क्योंकि वो आ ही नहीं सकते वहाँ तक अगर वो सरकार से सवाल पूछेंगे. लेकिन योर चैनल वाज सीम्स लाइक उधर का है, क्योंकि इलेक्शन से पहले लोग बोलते हैं गवर्नमेंट, इफ़ यू हेट गवर्नमेंट देन सी संजय शर्मा. देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैंने अपने YouTube चैनल पर डिबेट का कंसेप्ट शुरू किया उत्तर प्रदेश में, तो मैंने देखा कि जो मोदी मीडिया वाले चैनल हैं उनके डिबेट को लोग 5,000 6,000 और मेरे को 6 लाख लोग देख रहे हैं. इसका मतलब कि लोगों को जनमानस में ये बेचैनी है, जनमानस में पीड़ा है, वो अपनी चीज़ जानना चाहती है. आप मुझे इस देश के लोगों को बताइए, इस देश का 90% आदमी तो गरीबी में है, वो रेल में चल रहा है, वो बस में चल रहा है. उसे आपकी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और आपका सेंट्रल विस्ट्रा और आपके जहाज़ और उसको आपको अंबानी अडानी ये नहीं चाहिए. उसको चाहिए कि अगर ये मेरे EMI बढ़ गई तो इस सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा. अगर मेरे ये गैस का सिलेंडर ये 4 गुना बढ़ गया तो सवाल क्यों नहीं पूछ रहे लोग. टमाटर आज 150 रुपये किलो हो गए तो सवाल क्यों नहीं पूछ रहे. इस देश की 90% जनता अपनी परेशानियों को मीडिया में देखना चाहती है, और दुर्भाग्य ये है कि देश की 90% मीडिया आम आदमी की परेशानी दिखाना ही नहीं चाहती है. उसको लगेगा कि हमारे विश्व गुरु दुनिया में चले गए तो डंका बज गया. इधर चुनाव चल रहा है, डंका बजाते हुए, ढोल बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो हरियाणा के चुनाव में दिन भर उन चैनलों पे ढोल बज रहा है, प्रधानमंत्री ढोल बजा रहे हैं. तो आप जो सवाल हैं, आपकी ज़िंदगी से जुड़े सवाल हैं, आपके बच्चे को आप अस्पताल में लेके जाते हैं, आप कल्पना कर सकती हैं कि इस देश में ये हाल है कि आज भी या तो गांव में, देहात में, कस्बों में अस्पताल नहीं है, अस्पताल नहीं है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर भी हैं तो दवाई नहीं है. तो उसको ये सवाल मूलभूत मुद्दे चाहिए. ये मूलभूत मुद्दे कहाँ से आएंगे? ये मूलभूत मुद्दे केवल इधर से आएंगे. तो उसी का कारण ये है कि जब आप आम आदमी की बात सुनाई पड़ते हैं तो आप इधर के दिखने लगते हैं, लेकिन वो इधर का होता नहीं है. वो लोग होते हैं जो सरकार की आंख में आंख डाल के सवाल कर रहे होते हैं. तो आप ये मत मानिए कि वो इधर के हैं. कोशिश करिए कि आप जब पत्रकार बने, अशफाक भाई, एक अच्छे पत्रकार बने, तो दिमाग में रखिएगा कि इधर का ही रहना है, सरकार किसी की भी हो, सवाल पूछना है. थैंक यू. कभी संजय जी हमारा वहाँ भी आइए.
कभी संजय जी असम में भी आइए, देखिए, at least we have a different media. We have a completely different media. One of the main opposition leaders is right standing, sitting in front of you. उसको जितना airtime मिलता है कि सिपरसे को भी नहीं मिलता है. That digital media may lack analysis, that is also true. And but what mainstream media might one day fail to report, a boy with a smartphone is live streaming on YouTube. So that is raw news to us, something that cannot be manipulated. It's something that we see as it. So can we say that digital media is a necessary evil? Patricia, I think Karma first and then Patricia. I mean, you said that digital media does not do analysis, no? No, necessary evil. Analysis. No, what she said that It is not evil at all. You love all No. the reels and all that you watch on Instagram all the time. No. So, I mean, digital media is absolutely necessary because the kind of deep dive, the kind of analysis that we are able to do now with assistance of AI, if there is a government policy which is over thousands of pages, there are ways which AI helps me to pinpoint what are the crucial data that we need, how the, and you know, we create news. And there are a lot of, if you are a journalism student, you should join some of the Google classes. And there are lots of tools for journalists when you are able to sift through data. So increasingly what is going to happen to journalism is that you said a boy with a smartphone is live streaming. All these other kind of work like accident happened, something happened, all these daily routine news will be covered by people. We don't have to. The work of the journalist will shift into more deep dive, more data, more going to the ground. If the Chief Minister of Meghalaya says, oh, my state is doing wonderful, you can go to the ground and see the condition of the schools in Garo Hills. You can show, you can meet people. So that's how journalism will change. And there will always be people who will be asking questions of the government sitting in their studio. Now, I don't consider them journalists. On to the question of what a journalist should do, a journalist should always be anti-government and ask questions of the government all the time. And that is what we are not doing. Patricia, you want to add something? If you ask questions from the government, especially from the Prime Minister, you will be called anti-national. Now, how do you define being an anti-national in this day and age? Now, this is a problem, and I wish to ask this question to everyone in this room, especially politicians, because nobody actually challenges that notion. We continue to remain anti-nationals just because we are anti-government. Now, I have one thing to say about a boy with a smartphone live streaming something. In the newspaper medium, you have assistant editors, fact-checking, and then only bringing out the news. When you have somebody untrained and just streaming up something which could lead to communal conflicts, and in this country we know how fraught everything is. So there is a problem with anyone and everyone becoming a journalist with a smartphone. Of course, news is democratized now. Nobody has a sort of a hold on who is going to disseminate news. But I think there is a responsibility for anyone who wants to disseminate news. I agree with Sanjay Ji that his kind of journalism, what Dhruv Rathi had been doing before the last elections, has made a phenomenal impact on all of us who are watching the channels. So it's good and bad, like you said. I'm glad you used that phrase, good and bad. So how good or how bad is it depends on the user. In my state, we have these headmen, no? Every village has a headman. And you have YouTubers everywhere. So some YouTuber wrote or disseminated something that was completely not what the headman said at a particular meeting. Now that headman went and beat up that YouTube guy. A lot of that is also happening. So it is good and bad and ugly as well. Thank you, Patricia. I have to conclude now this session. Thank you so much. Thank you all, Yogendra ji, Sanjay ji, Karma, and Patricia. Both of thanks দিবৰ কাৰণে আগবঢ়াইছো Spivak Goswami
First and foremost, I take the opportunity to extend my heartfelt thanks to all the esteemed panelists. I think we have had the best panelists so far in the year 2024, the Conclave 2024 third edition. Their valuable insights have set the tone for impactful outcomes that will resonate far beyond these worlds. We are truly grateful for your time and expertise. I extend my heartfelt gratitude towards the audience who have been seated very patiently and been asking some pertinent questions. I thank the Assam Association Delhi, Assam Association Noida, Assam Association Gurgaon, Assam Association Faridabad, Assam People Welfare Association, and all the Northeast Civil Society members. Special thanks to all Assamese Student Association and the volunteers. Your readiness to assist in every way possible have been the key to the seamless execution of each and every session. I extend my appreciation to the entire student community of Delhi for their constant support for the conclave. Big thank you to our support system, the organizing team, production team, camera team, for working tirelessly day in and day out for this conclave to make it a success. Technical team, marketing team, digital team, transportation, logistic, accounts, team working from Guwahati headquarters, Sovik's team for event management. Vishaldeep, Bagmita, Tohid, it's their tireless efforts to make this a grand success. Mr. Nobojyoti Bora sir for his moral support. And regional and national media persons who have covered this year's conclave. I extend my gratitude to all the sponsors for their unwavering support. The Conclave 2024, presented by Dalmia Cement, Future Today, powered by Annapurna, Your Right to Purity, co-partners DIPR, Assam, State Bank of India, ONGC, NRL, also thanks to Priya Communication for outdoor support. I extend my heartfelt gratitude towards none other than the group chairman, Mr. Jayanta Barua, for his unwavering support, his leadership, and his commitment towards the success of this event. Could you please give a round of applause for him? শেষত মই সকলোকে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ অফুৰন্ত সঁহাৰি আৰু সহায়ে আমাক এই আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰেৰণা যোগায় আমি এক প্ৰচেষ্টাহে আগবঢ়াইছোঁ নৰ্থ ইষ্ট আৰু অসমক এই প্ৰেক্ষাপটত আনি যিমান জ্বলন্ত সমস্যা আছে ইয়াতে আগবঢ়াবলৈ আৰু ইয়াতে যদি আমাৰ কিবা ভুল হৈছে আমাক ক্ষমা কৰিব আৰু শেষত নমস্কাৰ শুভৰাত্ৰি আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে নেক্সট ইয়াৰ আমি কনক্লেভ 2025 আমি ইয়াতে এই মঞ্চত আকৌ পাতিব পাৰোঁ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ